बस हाइपोक्सिया भी इनको इतना अच्छा नहीं आता, हाइपोक्सिया पढ़ना है तुम लोगों को। स्टूडेंट्स आवाज आ रही है मेरे प्यारे 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 बच्चों? यस मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। कौन बताएगा क्वेश्चन नंबर 5? अवेश आवाज आ रही है? ये आमगा को ऐड कर। हाँ सर। अवेश, अच्छा, लारिब, हुमैरा, कोई तो बोलो। जरवा? यस मैम। जरवा, ओके जरवा बेटा, रीड द क्वेश्चन नंबर 5. Discuss the mechanics of खाली आप ventilation at मैकेनिक्स ऑफ rest and during exertional breathing. मुझे बता दो क्या And during inspiration. पहले हम इंस्पिरेशन करेंगे। And during yes ma'am. मैम ड्यूरिंग इंस्पायरेशन रेस्ट पे हमारा जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है -6 से शुरू करते हैं। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा सॉरी मैम। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होता है और प्रेशर डिक्रीज होता है। और जो इंट्रा प्रेशर है, प्रेशर डिक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है वो -1 डिक्रीज होता है और उसकी वैल्यू 759 हो जाती है। और जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है इंट्राप्लूरल प्रेशर वो -6 डिक्रीज होता है और वो 754 हो जाता है। ठीक है, शाबाश। यस मैम। उसके बाद एक्सपायरेशन और यू ब्रीथ इन, ठीक है, और इन अ प्रेशर ग्रेडियंट विल डेवलप एंड एयर विल मूव फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स। हो गया? चलो यस मैम। अब मुझे कौन बताएगा? ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपायरेशन फोर्सफुल इंस्पिरेशन। यस हिरा? Yes ma'am. During the forceful expiration we use some बेटा internal. speak loudly. Ma'am, during forceful inspiration we use some accessory muscles like sternocleidomastoid muscles, scalene muscles, serratus anterior muscles, and also the internal intercondral part. So we will also inspire the tidal volume along with the inspiratory reserve volume. So there will be about 3500 ml of air will enter the lungs with much more Very increase. good. Much more increase. ठीक है, समझ आ गई सबको? अब मैकेनिक्स ऑफ वेंटिलेशन में ड्यूरिंग एक्सर्शन कौन बताएगा? मोहम्मद अहमद? यस मैम। बेटा आप बताओ मुझे फोर्सफुल इंस्पिरेशन कैसे होगी, फिर हम करेंगे फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल इंस्पिरेशन के अंदर डायफ्राम के अलावा स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड एंटीरियर सेरेट। नहीं पहले नॉर्मल एक्सपायरेशन बताओ बेटा। अब हम उस पे आ गए। एक्सपायरेशन, इंस्पिरेशन तो हो गया था, अब हम एक्सपायरेशन पे रेस्टफुल एक्सपायरेशन बताओ। नॉर्मल एक्सपायरेशन मैम, इसमें सिर्फ डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है और डायफ्राम रिलैक्स होने की वजह से इंट्राप्लूरल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से लंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके अंदर एयर एक्सपायर हो जाती है। चलो ठीक है, कितनी एयर बाहर निकल गई? 500 ml है ना टाइडल वॉल्यूम। अच्छा चलो अब मुझे पहला बेटा मुझे बताओ एक्सपायरेशन ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग। जोर से बोलो बेटा।
बेटा सही से बताओ, फोर्सफुल में क्या हो रहा है? कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं फोर्सफुल ब्रीदिंग में? अच्छा चलो, अच्छा नहीं बेटा, तो डायफ्राम तो मसल ऑफ इंस्पिरेशन है ना, डायफ्राम नहीं बोलना है यहाँ पर आपको। ठीक है लारिब, आप बताइए। यस मैम। आप बताओ बेटा, फोर्सफुल एक्सपायरेशन कैसे होगी? मैम फोर्सफुल एक्सपिरेशन में हमारे पास होते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड मैम उसके अलावा इंटरनल इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल होता है और मैम रेक्टस एब्डोमिनस मसल होता है। और मैम उनकी मैम उससे ये होता है कि जो रिब्स होती हैं वो अपनी जो ओरिजिनल स्लैंटेड पोजीशन होती है उस पर आ जाती हैं। और मैम स्टर्नम और जो वर्टेब्रीज होता है उनके बीच का जो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। और मैम लंग्स जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाती है और हेयर जो हम एक्सपायर कर लेते हैं। तो बेटा प्रेशर इंक्रीज होता है ना, प्रेशर ग्रेडियंट। यस मैम। मैम प्रेशर +1 मतलब अगर 760 होता है नॉर्मली तो 761 हो जाएगा। और मैम क्योंकि जो वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 और जो एल्वेलर प्रेशर 761 है, तो वो जो एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है, तो वो लंग्स से हम एटमॉस्फेयर में हो जाएगा एक्सपेल। ठीक है, डिफाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमैरा खान। जरवा, हाँ जोर से बोलो। डिफाइन हाइपोक्सिया। The condition in which tissue is not oxygenated properly due to insufficient concentration of oxygen. टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया बता दो जल्दी से और साथ साथ एग्जांपल बताती जाओ। नंबर 1 मैम इसकी 4 टाइप्स होती है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। ये होती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन टेंशन कम हो जाती है। दो कॉजेस बता दो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया के। इसमें ये हाई एल्टीट्यूड पे होती है, फिर हाइपरवेंटिलेशन हो जाए ये जब होती है। और जो मैम एनीमिक हाइपोक्सिया है ना, उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है और हाइपरवेंटिलेशन हो जाती है। बेटा लंग डिजीजेस इसका मेन कॉज है ना। ठीक है, नंबर 2 बताओ। लंग डिजीज पे हाई एल्टीट्यूड पे लंग डिजीज पे होती है और रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है उसमें होती है ये। ठीक है, और जो सेकंड टाइप जो एनीमिक हाइपोक्सिया जो है एनीमिक हाइपोक्सिया मैम उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। एनीमिया में होती है जो एनीमिया के अंदर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम हो जाती है। एक तो एनीमिया हो गया, दूसरा कॉज एक साइनाइड पॉइजनिंग की वजह से होती है। साइनाइड पॉइजनिंग कार्बन ये तो मैम आरबीसी की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। आरबीसी कंसंट्रेशन आरबीसी की नंबर हो गया ना, वो और एक मैम एनीमिया हो गया। और कौन बताएगा इसका कोई और कॉज है एनीमिक हाइपोक्सिया का? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड टाइप कौन सी है? वो स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया होती है, उसके अंदर वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो कम हो जाती है। ये हार्ट फेलियर में होती है, शॉक में, इस्कीमिया वगैरह में होती है। ठीक है, वेरी गुड। फोर्थ टाइप मैम टॉक्सिक हाइपोक्सिया, उसमें तो सेल्स होते हैं ना वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर पाते, वो होती है सर्जिकल शॉक वगैरह में। वो मैम वो हो जाती है कि साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर होती है, वो अल्कोहल्स वगैरह में नेक्रोटिक्स वगैरह लेने की वजह से होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सर्फेक्टेंट एंड फ्रॉम वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड? कौन बता रहा है? हफ्सा मैं बता दूं? हाँ बताओ, हाँ बताओ। एक सेकंड मैम जी मिस, ग्लाइकोप्रोटीन्स। मैं परफेक्ट है, ग्लाइकोप्रोटीन पूरा पहले तो उसका नाम बताओ। बेसिकली सॉरी आई डोंट नो मैम अच्छा चलो हीरा बता रही थी। मिस सॉरी आई कांट रिकॉल। मैम डायपल्मिटाइल लेसिथिन और डायपल्मिटाइल जोर से बोलो। मैम डायपल्मिटाइल लेसिथिन। हाँ, डायपल्मिटाइल फॉस्फेटिडाइलकोलिन या डायपल्मिटाइल लेसिथिन। वेरी गुड।
Composition calcium ions plus some proteins. or calcium ions and apoproteins. From where it is produced? Type 2 pneumocytes. Type 2 pneumocytes. ठीक है. Of the How surfactant reduce the surface tension? ये हम कर चुके हैं, है ना? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. अब डॉक्टर काजोलीन एंटर हो रही है मीटिंग में, अपना क्वेश्चन करेंगी, ठीक है? अरे आपको हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम. सब सुन रहे हैं मेरी आवाज? वालेकुम अस्सलाम मैम. ओके, हम शेयर कर रहे हैं पेपर. मेरा तो आएगा, ठीक है? इस सबको आगे तो डाउनलोड कर, अनम्यूट कर दी. ओके ओके क्लास, meanwhile we are sharing the paper. Tell me some of the questions. What are the different modes of transport of carbon dioxide in blood? Can you hear me? Yes, Hiralta. Ma'am, the carbon dioxide, it can go in the form of bicarbonate ion, like Yes. Tell me the percentage as well. like it is 73, 6, 70%, ma'am. Ma'am, 70% carbon dioxide is transported in the form of carbonate ions, and 23% in the form of carboxyhemoglobin, like carbaminohemoglobin, and 7% in the dissolved form. Yes, good. And if now the second question, compare Haldane's and Bohr's effect on gas transport in the blood. So you're going to tell me first Haldane's effect. Who is next? Ma'am, may I? Yes, yes. Ma'am, increasing carbon dioxide will cause auto displace from the hemoglobin. Ma'am, ये ना अब carbon dioxide transport के अंदर important होता है. Yes. Please class, wait for a minute. Let Sania share the paper. Then we will do the next one. Share screen. ये डॉक्टर राम. Yes.
Okay, can you see the paper now? Yes, ma'am. Class, can you see the paper on screen? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. Okay, let's start the paper. Who is going to read the first question and answer it? Yes, Hera. Yes. The neurons responsible for regulating the limit of duration of inspiration are located in which of the following area of the respiratory center? It's dorsal group Yes. of neurons. Limit the duration of inspiration, beta. Ma'am, limit the duration of inspiration. Inspiratory switch of neurons होते हैं ना, तो they are in the DRGs, dorsal respiratory group of neurons. No, the thing is, for this, you must know all the functions of all the Center. four areas. Pneumotaxic area. Ma'am, pneumotaxic Yes, center. pneumotaxic. Yes, C is the answer. Who is saying this? मैम मैंने बता ठीक है. Any confusion? You know, this is the function of the pneumotaxic area, that it limits the duration of inspiration, and while the function of apneustic is it prolongs the duration of inspiration. While the function of dorsal group of neuron is it is concerned with the quiet respiration, formation or initiation of rhythmic during the quiet breathing, while the ventral during the exercise. Got it? Next, Vitaly. Yes, ma'am. कौन है next? Where is the sheet? Yes, Abdul Munir. Yes, ma'am. The affinity of hemoglobin for oxygen is increased under which of the following conditions? Yes. Ma'am, carbon monoxide poisoning. Yes. How much it is increased? 200 times. Yes, It ma'am. is increased 200 times. Good. Next. Ma'am, it increased, not decreased. यहाँ पे decrease Yes. होना चाहिए. Ma'am, affinity of hemoglobin for oxygen is increase नहीं होना चाहिए था, फिर decrease होना चाहिए था अगर carbon monoxide poisoning है तो. Sorry, say it again. Ma'am, carbon monoxide poisoning तो तब होता है ना जब यहाँ पे लिखा होता है कि decrease affinity है oxygen के लिए. No, during the carbon monoxide poisoning, oxygen hemoglobin affinity is increased. It is increased 200 times. So oxygen combined रहती है hemoglobin से. That is why वो poisoning होती है. ठीक है? In all the other cases, acidosis में, anemia में, acclimatization to high altitude or exercise में, we need oxygen at the tissue level. तो सारा की सारी affinity जो है वो decrease होती है और oxygen hemoglobin से release हो जाती है. ठीक है? Yes. Do you get it? Yes, ma'am. I get it. Who is next? Yes, there is the sheet. Hafsa. Hafsa. Are you there, Hafsa? Amha. Yes, ma'am. I have 54 questions. Herringbrew reflex in human beings is not activated until the tidal volume increases above 1.5 liters. You are saying the answer is not anybody else? Yes, ma'am. B option. It is activated when the tidal volume increases above 1.5 liters. It is not 2. What is Herringbrew reflex? Important for the control. Yes, class. Anybody else? Ma'am, it will decrease the rate of respiration. Yes, it is a lung overinflation signal. And during this reflex, when the lungs are overstretched, the stretch receptors that are located at the bronchi, bronchioles through the vagi, and they send signal to the DRG and decreases the respiration rate.
And if you are saying it is not activated, but the truth is it is activated when the tidal volume is increased above 1.5 liters. Do you get it? No, ma'am, it is not activated until it is increased than 1.5 liters. Statement में ये mentioned है. 1.5. What is the function of Herring-Brewer reflex? What about this decrease the rate of respiration? It is not true? It's It true. is also, but the B option is also making sense of it. No, it is saying it is not activated until the tidal volume increases above 1.5. While we say it is activated when the tidal volume is above 1.5. You can say the until word is the confusion word. Yes. Yeah. If we remove this until, then tell me the answer. Which is the best answer? And then it would be A. Yes, because this is the effect of Herring-Brewer reflex. The best answer is it decreases the rate of respiration. Do you get it? All of Yes, you? ma'am. It limits, what is Herring-Brewer reflex? It limits the respiration. It is lung overinflation signal. All of you? अब confusion तो नहीं है? No, ma'am. No, ma'am. So A is done. Come to 4. Who is the next one? Muhammad Abdullah. Muhammad Abdullah. Muhammad Ahmad. Yes, ma'am. Yes, Muhammad Ahmad. Read question number 4. Oxygen debit is the amount of O2 consumed after cessation of exercise increased because the pulmonary capillary walls limit O2 uptake during exercise. Just The tell me the answer. What is oxygen debt? Anybody else? Any of you? C. C option. C option. Anybody else? Not C. Amount of oxygen consumed after cessation of exercise. A. Who is this? Hera. Hera, you are right. औरों को बताइए. Why? Oxygen depth means we are consuming more oxygen because we have consumed it more during the exercise. So just after the exercise. After exercise, after cessation of exercise. What is oxygen debt? Yes, Hera? मैम क्योंकि हमने ऑक्सीजन ज़्यादा यूटिलाइज की है ड्यूरिंग एक्सरसाइज तो उसकी जो कमी है उसको पूरा करने के लिए हम ऑक्सीजन ज़्यादा तेज सांस लेके पूरी करते हैं. Yes. Oxygen, what is the normal debt? Debt क्या होता है? जो कि due होता है, that is we have to pay, जो कि हमें बाद में उसको pay back करना होता है. That is the debt. Oxygen debt क्या होगा? हमने जो ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम कर ली है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, आफ्टर एक्सरसाइज वी हैव टू पे बैक. दिस इज ऑक्सीजन डेट. तो हमने जो जितनी यूटिलाइज कर ली होती है उसको हम कहते हैं वो कब हम करते हैं? वी स्टार्ट हाइपरवेंटिलेशन ड्यूरिंग द एक्सरसाइज. जैसे ही हम एक्सरसाइज के लिए करते हैं, बिफोर कि हमारी जो केमिकल सारी जो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच चेंज हो, उससे भी पहले हमें कॉर्टेक्स जो है जब मूवमेंट करना शुरू करते हैं तो प्रोप्रायोसेप्टर से सिग्नल्स जाते हैं और वो हाइपरवेंटिलेशन स्टार्ट करते हैं ब्रेन स्टेम से. हाइपरवेंटिलेशन स्टार्ट होती है, लेकिन आफ्टर द एक्सरसाइज भी हाइपरवेंटिलेशन रहती है. हैव यू ऑब्जर्व दिस? वो क्यों रहती है? ताकि वी कैन गेट मोर ऑक्सीजन एंड दैट इज द ऑक्सीजन डेट. गॉट इट? एवरीबडी एल्स? Yes, ma'am. That is oxygen debt. We have to pay back. हमें ये debt देना है, ये हमारे पर due है. Normally what happens, your body has 2 liters stored oxygen. कहाँ store होती है? Who is going to tell me? मैम क्या चीज? Extra oxygen कहाँ store होती है? मैम मायोग्लोबिन में. मायोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में. मायोग्लोबिन में 0.25 लीटर, हीमोग्लोबिन में 1 liter, body fluids में 0.25 liter, in the lungs 0.5 liter in the form of residual volume.
So we used to utilize all of this 2 liters during the exercise. Then we have to pay back, that is the oxygen debt. And this is done by hyperventilation. और usually हम जो oxygen debt होता है वो जो exercises होती हैं like sprint 100 मीटर sprint किसने देखी हुई है? किसी ने देखी हुई है? यूसेन बोल्ट को जानते हैं कोई? Yes, ma'am. कितने सेकंड में करता है वो 100 मीटर? 10 seconds, यस 9 कुछ में. तो ठीक है, अब याद रहेगा, वो ऑक्सीजन डेट बाद में देता है क्योंकि कितनी यूटिलाइज कर लेता है 10 सेकंड में 100 मीटर का स्प्रिंट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 5. हु इज नेक्स्ट? मोहम्मद हुदैब. Hypoxemia produces hyperventilation by the direct stimulation of which of the following receptors? Ma'am, E है carotid body chemoreceptors. यस यस. एनीबॉडी एल्स? इसमें कोई मसला तो नहीं है? पेरिफेरल रिसेप्टर्स जो है ना वो ऑक्सीजन को सबसे ज्यादा करते हैं, उनका स्टिमुलेशन डिक्रीज ऑक्सीजन होता है. डिक्रीज ऑक्सीजन इन द ब्लड इज नोन एज हाइपोक्सीमिया. और यहाँ पे पेरिफेरल की हमें एग्जांपल दी हुई है कैरोटिड बॉडी. डू यू गेट इट ऑल? Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 6. मुझे बात है ना. यस, तलहा बिन यासीन. यस, क्वेश्चन नंबर 7. 6 है. यस. यस, बताइए. हाइपर वेंटिलेट कर रहे हैं. एक सेकेंड. कैन यू सी द पेपर राइट नाउ? ओके, मेरे पास जूम मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट. अच्छा, एनीवे अभी हैं. अच्छा, ये तो भी okay. Okay, now I can see the paper too. Okay, yes. If a person with normal lung function hyperventilates for several seconds, which of the following chemical changes is affected? In good. Yes. Hyperventilate करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. Anybody else? कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. क्वेश्चन नंबर 7. हरी आप, बहुत लंबा है. जरवा मोमल. जी जरवा. हुमैरा. हुमैरा मैं बता दूं? जी जी जल्दी बताएं. वेरी इजी. Okay. At high altitude, there is an increased production of red blood cells, which is due to the stimulation of bone marrow by erythropoietin hormone, which is produced by kidney. A. Very good. Next. हुमैरा. लाइबा. लाइबा. लारेब. Yes, ma'am. Yes. Read question number 8 and answer it. Chronic mountain sickness is associated with an appropriate increase in blood flow to the brain, a decrease in pulmonary arterial pressure, right heart hypertrophy and heart failure, left heart hypertrophy and heart failure, a decrease in the pulmonary बस आंसर बता दे बेटा. Ma'am, C. जी. C. C. Yes.
और क्या क्या होता है? Anybody else? Chronic mountain sickness में जब बहुत अरसे तक हम chronically, yes, RBC is increased, pulmonary pressure is increased due to the increased RBC too much होते हैं, pulmonary pressure is increased due to the vasoconstriction. And what happened? Right side of the heart failure, enlargement, hypertrophy and heart failure. Good. Anybody else? कोई confusion? No, ma'am. Question number 9. Next. Who is next? Hafsa? Hafiza Ayman? I cannot hear you. Awais is Yes, start. ma'am. Yes. Question number 9. Ma'am, both peripheral and central chemoreceptor contributes to increased ventilation that occurs as a result of ma'am decrease Decrease. oxygen, arterial oxygen. Oxygen पे तो वो नहीं देता central. Increased carbon dioxide. Increase arterial Yes, yes, yes. Increased arterial carbon dioxide. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड जो है H+ होगा और कार्बन डाइऑक्साइड पे दोनों सेंट्रल एंड पेरिफेरल देते हैं. ठीक है. कम टू द नेक्स्ट. Abdul Munim. Question number 10. Pneumotoxic center functions This primarily we have to done. Yes, बताइए जल्दी से. limit inspiration. Good. अगर यहाँ पे वो आता एपनियोटिक सेंटर, एपनियोटिक तो कौन सा आता? Prolonged inspiration. Prolonged inspiration. अच्छा, Incasians disease 11. Hiral Taf. Very easy question. Formation of nitrogen bubbles. Formation of nitrogen bubbles. Yes, next who is? Hafsa? Yes, ma'am. Yes, read question number 12 and answer. Blood hydration ions stimulate respiration by acting on peripheral chemoreceptors. Central chemoreceptors. B. B. Good. Who is next? This is Amra. Yes. सा सवाल है. जी Amra, read it. In Cajun's disease, the blood vessels are blocked by development of nitrogen bubbles. Good. Next who is Mohammed Abdullah? 14. Mohammed Abdullah. Mohammed Ahmad. Yes, ma'am. Yes, 14. Read it, 14. At high altitude where atmospheric pressure is halved, there is an increase in. ठीक है, तो just आप just think के there is low atmospheric pressure, low oxygen, there is partial pressure of oxygen is low. Then क्या बताएंगे? क्या होता है? Increase किसमें होता है? Pulmonary blood flow. Increase whenever there is hypoxia, vasoconstriction होती है. Cerebral blood flow. Yes. Yes. Cerebral Who is blood this? flow. Hafsa. Who is this? Huh? Hafsa. Very good, Hafsa. Two things happen when we are at high altitude due to hypoxia, pulmonary edema and cerebral edema due to the high blood flow. लेकिन pulmonary edema होता है vasoconstriction की वजह से और cerebral होता है due to increased blood flow. The answer is cerebral blood flow. दो चीजें याद रखिएगा. Acute mountain sickness में there are two things: pulmonary edema and cerebral edema due to increased blood flow. Question number 15. Where were we? Mohammed Hudayb. Ma'am, E answer है. पढ़िए तो. Peripheral chemoreceptors are strongly sensitive to which one of the following chemical factors in the blood? Yes. कितना ऑक्सीजन कम हो जाए? कितना पार्शियल प्रेशर? Ma'am, 60 से नीचे शायद. Yeah, 60 to 30. Very good. Very good. Who is next?
Talha bin Yasin. Read question number 16. Very good. Yes, Zarwa, question number 17. Yes, Zarwa. Humaira. Humaira. Laiba. Lareb. Yes, ma'am. Which of the following effects is present in a person who is acclimatized to high altitude? Yes, अब बताइए. The person is acclimatized. ठीक है? Yes, ma'am. During acclimatization क्या क्या होता है? 5 things होती हैं. Who is going to Ma'am. tell me 5 mechanisms of acclimatization? ये आपको याद होने चाहिए भाई. Ma'am, polycythemia. Ma'am. Increased vascularity, increased red blood cells. तो ये फर्स्ट, तो इसमें कौन सा ट्रू है? यस, इंक्रीज वैस्कुलैरिटी ऑफ द पेरिफेरल टिश्यूज. दिस इज द आंसर. ठीक है? ड्यूरिंग एक्लिमेटाइजेशन, ठीक है? डू यू गेट दिस? There is always increase in vascularity of the peripheral tissues, so the person gets more oxygen, and more oxygen is utilized. Who is next? Larib, Hafiza Ayman. Hafiza Ayman, Awais Irshad. Yes, ma'am. Hafiza, read question number 18. A 38-year-old woman moves with her family from Karachi to Gilgit. Which of the following adjustment will occur as a result of residing